Welcome you all. Today we'll be solving linear algebra from year 2021 from CSE Maths Optional PYQs. So let's begin our journey. Linear algebra. 2021 CEC. Okay. Sorry. So we have to show that this term without finding A inverse. So the things that should come our mind should be Cayley-Hamilton theorem. So as per that, as per Cayley-Hamilton theorem, Cayley-Hamilton theorem, the matrix will satisfy its characteristic equation. So characteristic equation is A minus lambda I equals to 0. So it is nothing but 1 minus lambda minus 1 1 0 minus 1 minus 1 minus lambda minus 1 minus lambda 2 1 0 minus lambda. This is equals to 0. So fine, we have to do this. I think we are right. Okay, yeah. No, lambda 1 plus lambda 0 1 2 minus lambda. Okay, I think we are right. Lambda 1 minus lambda square minus 2 lambda plus 1 plus lambda equals to 0. Lambda minus lambda cube minus 2 lambda plus 1 plus lambda is equals to 0. This get cancelled. So we are nothing but q1. So will be said this equation this will be satisfied by matrix. So it will come out to be A cube is equals to I1 in matrix equation will become identity matrix. So taking inverse both side, inverse both side, this will come out to be A inverse A square is equals to A inverse. A inverse is nothing but I, you know that. Yeah, that hence we have to prove the thing that we need to. So it was an easy question. Just we have to apply Cayley-Hamilton, sorry. So find the matrix associated with the linear operator V3 defined by this linear transformation, and order basis is this one. Okay, so these type of questions are frequently asked in CSE, like even in 2023 this type of question were asked. So what happened that, so like what we can do is that we have been given transformation as TAB, A comma B comma C is A plus B, A minus B, 2C. Now with new basis, let's say we call it as B1 is nothing but 0 1 comma 1, B2 is nothing but 1 comma 0 comma 1, B3 becomes 1 comma 1 comma 0. Now transformation at B1 is nothing but transformation 0 comma 1 comma
Yes. So it will be AB is 1, A minus B is minus 1, is 2C is 2, T 1 0 1 1 A minus B 1, 2C is 2, 1 comma 1 comma 0. Yeah. Now with respect to new basis, our transformation value is these. Now we have to represent these values in terms of new basis. So let's assume it as ABC. Let's say ABC is element of R cube V3 basically. So we have to represent ABC in terms of new basis. So what we can do here, ABC is x times basis 1. Basis 1, now let's write directly. Basis 1 is nothing but 0 1 comma 1 y 1 0 1 x y z 1 1 0. Now what we can do here, we can expand it. 0 से नहीं हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस z हो जाएगा. Now x y 0 हो जाएगा, z. Now x y, this will become ABC. So by comparison we can say that A is nothing but y plus z, B is nothing but x plus z, C is nothing but x plus y. Now what we can say from here, that x plus y plus z, अगर इनको तीनों को जोड़ दें, adding all of them, it will come out to be x plus y plus z is 2 बार आएगा, तो इसको इधर ले आ जाए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2. हमें चाहिए क्या, हमें x चाहिए ए बी सी के टर्म में. तो x चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू हियर, say it 1, say it 2, say 3. व्हाट वी डिड हियर, 1 plus 2 plus 3. So what you can do here, say this 4. अगर हम क्या करें कि हम 4 minus 1 कर दें, तो we'll be getting x. X will be nothing but b plus c minus a by 2. Similarly 4 minus अगर हम 2 करें तो y मिल जाएगा हमें a plus c minus b is, yes, 4 minus 3 कर दें तो we'll be getting z a plus, sorry, b plus c minus a, नहीं, yeah, a plus b minus c. I think we are correct. Yeah, so we can put it here, the equation, say it is a, putting in a, these, putting x y z in a, we get a b c is nothing but b c minus a by 2, 0 0 1 0 1 1. Let's we can call it as b1, स्पेस बचाने के लिए. Now y a plus c minus b by 2 is b2, a plus b minus c by 2 is b3. Now t of basis 1 was nothing but 1 minus 1 2, 1 minus 1 2. Now we can put it here, so हमें b पता चल जाएगा. So अगर हम रखें तो b is nothing but 1 0 हो जाएगा, 0 b1. I think we are right. Yes. AC a 3 4 2b. अगर हम a b करें,
AB is 0, C is -2, -1, B3. All good? Yeah. So TB2 would be TB2 transformation at vector 2 112 112 112 it will become BC करें तो 1 बन जाएगा B1 AC करें AC 3 AC 3 1 2 B2 अगर A B करें तो ये 0 हो जाएगा तो TB3 2, 0, 0 2 0 0 ये -1 हो जाएगा -B1 अगर ये करें तो ये 1 हो जाएगा B2 ये भी 1 हो जाएगा B3. So transformation matrix T with respect to basis B is nothing but the new matrix B1 B2 B3 small b. तो ये वाला हो जाएगा 0 2 -1 0 2 -1 1 1 0 -1 1 1. Yeah, I think we are right. Zero 2 ठीक है 1 1 0 -1 1 1. Yeah, this is the matrix. We have to solve it. क्या करना था? Find the matrix associated with the linear transformation. Yeah, this is the associated matrix with this is matrix with new basis. Done. So this is S. ये सेट है जो कि बताना है कि दिस इज सबस्पेस ऑफ R3. फाइंड 2 बेसिस ऑफ S एंड ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन. सो स्पेस सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या है कि लेट S1 S2 B S एंड A B बिलोंग टू फील्ड. दिस इज बेसिकली R is F फील्ड. तो प्रूफ करने के लिए फॉर सब स्पेस फॉर S टू बी सब स्पेस फॉर S टू बी सब स्पेस what we need to do is A S1 plus B S2 should be element of S. This we need to show. So let S1 is x1 2y1 3x1 and S2 is x2 2y2 and 3x2 and ABC AB belong to real number. Basically field is R here. So now what we have to do here, now AS1 plus BS2 would be AX1 plus BX2, yes, 2AY1 plus BY2, 3AX1 plus BX2, yeah, is now what we have to do here, we have to show this belongs to S. So we know that so AX1 plus BX2 belongs to is element of R, yes, and twice of, चूँकि this is in real number element multiplication and element addition are closer, that's why we can say such. So it will be by 3AX1 BX2 into R. We can write here in real number
closure property satisfied. Closure property is valid with respect to addition and multiplication. Valid with respect to addition and multiplication. So therefore a s1 plus b s2 is element of R cube. A s1 plus b s2 is element of S. नहीं तो दिखाना था. Hence S is a subspace, and therefore S is a subspace of R cube R. So now we have to show that you have to find the basis. We know that S is x plus 2y plus 3x. We can write it as x one comma 0 comma 3 plus y 0 comma 2 comma 0, where x and y are real number. So S is spanned by these vectors. Therefore, so here linear transformation of span of linear linear combination of S1, where S1 is 1, 0, 3 and 0, 2, 0. This is right. So we can move ahead with here. This is S, this is S. So now the linear combination of S1 now here 1, 0, 3 and 0, 2, 0 are linearly independent, because a 1, 0, 3 plus b 0, 2, 0 would be only when a 0 होगा b 0 होगा. दिखा सकते हैं अपन चूंकि. So are linearly independent. That's why S1 1, 0, 3 and 0, 2, 0 is basis of S, right? So the dimension of S1 is 2 because there are two elements in S1. So dimension of LS1 is 2. It's fine. Okay, then go ahead. It was an easy question, not that tough. So prove that the eigenvector of corresponding two different eigenvalues of a real symmetric matrix is orthogonal. So we have given symmetric matrix. So symmetric matrix is given symmetric matrix. Symmetric matrix A such that A transform is A because it is symmetric. Eigenvectors, let lambda 1, lambda 2 be two eigenvalues, two distinct eigenvalues. We need to be careful. Distinct
eigenvalues corresponding to vectors, eigenvalues corresponding to two eigenvectors x1 comma x2 respectively. Now we know that a x1 is nothing but a lambda x1 because lambda is lambda 1 is eigenvalue corresponding to eigenvector x1. So taking transpose both sides, transpose x1 transpose a transpose lambda 1 transpose x1 transpose, because you know that AB transpose is nothing but B transpose A transpose, and here lambda is a real value. Two distinct of real symmetric matrix. So lambda 1 and lambda 2 are real number because matrix is real matrix. So here from here we get that, we know that. So what we can do here, तो क्या करते हैं ना कि x1 ट्रांसपोज A ही हो जाएगा एंड लैम्डा 1 ही हो जाएगा x1 ट्रांसपोज, बिकॉज A ट्रांसपोज इज A एंड रियल नंबर का ट्रांसपोज इज रियल नंबर. Okay, now pre-multiply with x2 x1 transpose A lambda 1 x2 x1 transpose. अगेन इधर इसको इस वाले टर्म को LHS में ले दिया, x2 x1 ट्रांसपोज A माइनस लैम्डा 1 i इज इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं, अब चूँकि हमें कुछ करना है, हमें इसको जीरो कर देंगे. अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला टर्म नॉन ज़ीरो है तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली. देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. सो व्हाट वी कैन डू हियर, पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. पोस्ट मल्टीप्लाई विथ x2, तो x2 x1 ट्रांसपोज A x2 minus lambda 1 x2 is 0. Now we know that x2 x1 transpose is nothing but lambda 2 x2 minus lambda 1 x2 is 0. Now x2 x1 transpose ये यहाँ से हो जाएगा lambda 2 minus lambda 1 x2 is equals to 0. We know that given that since तब यहाँ से बोल सकते कि ये तो जीरो तो हुआ ही नहीं, ये जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो. सो x2 x1 ट्रांसपोज इज ज़ीरो बिकॉज चूँकि lambda 1 is not equal to lambda 2 x2 is, and x1 x2 is not equal to 0. That's why this becomes like this. Therefore both vectors are orthogonal. We are done with that. तो ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए यही होता है कि A पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर का ट्रांसपोज शुड बी 0. इसको करने के लिए like two square matrix of order 2, and so that the trace of AB is equal to trace of BA, so that B minus A is not equals to identity of order 2. Okay, तो इसको करने के लिए like what we can do,
एक सिंपल मेथड जो आता है कि लाइक ए को मान लो कोई दूसरा, ए कैन बी अज्यूम्ड एज समथिंग अ वेक्टर of order 2 and b can be assumed a different vector of order 2. So this method we can apply, like this method should come to our mind, like a can be assumed that a1 b1 a2 b2 b vector of order 2 can be assumed as c1 d1 c2 d2. So we can multiply ab is nothing but a1 c1 b1 c2 a2 c1 plus b2 c2 a1 d1 plus b1 d2 a2 d1 b2 d2. Yes, I think we are correct. Okay, now BA is, तो ट्रेस पूछ लेते हैं. ट्रेस ऑफ AB is डायगोनल का सम, तो ये वाला A1 C1 B1 C2 A2 D1 B2 D2. Now we find BA would be nothing but BA, अगर हम करें BA तो ऐसा लिख लेते हैं, इट विल बी कन्वीनियंट. C1 D1 C2 D2 A1 B1 A2 B2. I think right. A2 B2, yes. If you multiply it, A1 C1 plus D1 A2. Okay. C1 B1 D1 B2 C2 A1 plus D2 A2. Thereafter C2 B1 plus D2 B2. तो ये BA, तो ट्रेस नथिंग इज इक्वल्स टू A1 C1, यहाँ से आएगा D1 C2, यहाँ से आएगा A2 D1, यहाँ से आएगा D2 B2. दिस इज A, दिस इज B. Since 1 equals to 2, therefore trace of AB is nothing but trace of BA. Hence we have proved. Now we have to also show that BA minus AB minus BA is not equals to I2. तो IAB minus BA हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. अगर हम करें ऐसा तो A1 C1 तो कैंसिल हो जाएगा, B1 C2 आएगा, B1 C2 माइनस यहाँ से D1 A2 आएगा, D1 A2. नाउ A1 D1 B1 D1 यहाँ से जाएगा, इतना सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं है. Here it will get cancelled. D2 B2 will cancel. A2 D1 minus A2 D1 minus C2 B1. यहाँ से ये आया. Now what we can do here, A1 D1 हमें यहाँ पे पता है and B1 D2 यहाँ पे पता है, तो बस A1 D1 B1 D2 A1 D1 plus B1 D2 minus C1 B1 minus D1 B2. तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये ज़ीरो नहीं होगा फॉर एनीथिंग ABCD. So
लिख देते हैं A2C1 B2C2 A2C1 B2C2 minus C2A1 minus D2A2. So this will not become 0. Simply we can say that this entire term is not equals to I2 for every ABC, A1 B1, A2 B2, C1 D2, C1 D1, C2 D2 belongs to R. So it will not become I2. Therefore AB minus BA is not equals to I2. Hence proved. So हमने दिखा दिया ये, तो हो गया ये proof. Now coming to the last question, I think it is second last. Yeah. So quickly we wrap it down. It's the following row reduce echelon form. Like every year such kind of questions are asked. So the thing that we need to keep in mind that we need to be very careful with respect to calculation. एक का भी गलती हो जाएगा प्लस माइनस में तो will not be getting the correct answer, because row reduce echelon form is unique, while echelon form can be multiple for same matrix, but row reduce echelon form is unique. So until unless you do not get the particular solution as the same as the answer, you will not get the final full marks basically. So we'll be doing calculation carefully. So what we can do, I'm not writing the expression explicitly, I'm just writing here only. So we can do, यहाँ पे 3 का फैक्टर चल रहा है, तो just we have to reduce the column, the bottom rows into zero column, sorry 0 row. Basically try to reduce the elements of the matrix to 0 of the bottom row, sorry. Yeah. So R3 को हम लोग लिख सकते हैं R4 basically, rather R4 can be written as R4 minus 3 times of R1, 3 times of R1, yes. R2 can be written, R3 can be written as R3 minus twice of R1. Basically करने से ये वाला टर्म 0 हो जाएंगे, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर. सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 माइनस 5. यहाँ से अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस 2. अगर 3 6 3, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, अच्छा माइनस 2 हो जाएगा. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, यस आई थिंक वी आर करेक्ट. ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 2 2 0 1 3 2 4 1. नाउ वी कैन डू हियर एक और चीज़ कर सकते हैं कि लाइक ये चूँकि हमें पिवट हमें 1 बनाना पड़ता है रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो वी कैन डू हियर इज R2 को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए R2 बाई हाफ से, तो ये 1 हो जाएगा. क्योंकि पिवट 1 होता है, पिवट बेसिकली जो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट दैट विल बी पिवट. तो ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाएगा एट द लेटर स्टेजेस, ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस. तो व्हाट वी कैन डू हियर, तो ये वाला टर्म, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला. तो वी कैन R3 को हम लोग क्या सकते हैं, R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, तो ये 0 हो गया. एंड वी कैन ऑल्सो डू हियर इज R4 को हम लोग लिख सकते हैं R4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2. ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाएगी. अगर ये 0 5 बार 0 हो जाएगा, ये 5 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. दिस विल बिकम 0 0 0 0 0. यस 0 0 1 1 0 1 3 2 4 1. राइट. वी कैन एक्सचेंज R3 को R4 से, बिकॉज
our task is to reduce the bottom most row into 0. तो ऐसा करने से हमारा गोल फुलफिल हो जाएगा. अगेन व्हाट वी कैन डू हियर इज R4 को हम लोग जो हियर वी कैन डू हियर R, ये इसको 1 बनाना है. R4 को हमने कर दिया, पहला ऑपरेशन करा कि R4 को 1/3 से डिवाइड कर दिया, फिर R4 को इंटरचेंज कर दिया. सो व्हाट वी कैन डू हियर, द थिंग दैट विल गो लाइक दिस. सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 0, ये 1 1, this will 0 0 1 1 0, this will become 1 3 2 4 1. Okay, so this is pivot and यहाँ पे 0 है तो ये pivot नहीं है. So row this is echelon form. This is echelon form. Basically अब यहाँ से कुछ स्टेप्स फर्दर लेंगे तो विल बी गेटिंग रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म. सो हमें रैंक निकालना है. तो इवन एट दिस स्टेज ऑल्सो वी कैन से दैट द नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 3 इज बेसिकली द रैंक ऑफ ए. बट यहाँ से हमें रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में जाना है. तो व्हाट विल बी डूइंग हियर. So the column where there is pivot, in that column the only element should remain non-zero would be pivot element. तो कहने का तात्पर्य ये है कि लाइक इस वाले कॉलम में जहाँ पे pivot 1 है तो pivot के अलावा rest of the element should be 0. Here also, here the pivot is 1. So except pivot, all the terms should be 0. So we can manipulate similarly. So what we can do here, R1 को लिख सकते हैं R1 minus twice of R2. Yeah. And similarly R2 को लिख सकते हैं R2 minus R3. तो कहने से होगा क्या कि ये वाला टर्म 1 3 ये 0 हो जाएगा. दिस विल बिकम 2. दिस विल बी एज इट इज. या दिस विल बिकम 0 0 1 1 0. अब क्या करना है कि R2 minus R3 करना है. तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम -1. and 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0. तो अभी भी ये पिवट है जिसका ये वाला टर्म नेगेटिव, ये जिसका ये वाला टर्म पॉजिटिव है, नॉन ज़ीरो है बेसिकली. तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3. तो इट विल बिकम लाइक दिस. तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 sorry 1 0 minus 1. Fine. So if it multiply 2 and 1, it will become 0. This will become -1. 1 3 0. So I think we are done. Like this is pivot. Except in this column, except this element, all the elements in this column is 0. Fine. Similarly, this is pivot. And this is not pivot. So this is our row reduce. This is row reduce echelon form. Here also the number of, here also we can say that like number of non-zero rows is 3. Is basically the rank of it. Either you can say this from the echelon form or row reduced echelon form. Both will be correct. So this question I didn't take out a screenshot and attached here.
So I just written them here. So solution would be, let's go in right format. Yeah. This is very simple question. The like eigenvalues, we have to find eigenvalues and corresponding eigenvectors. So eigenvalues find canonically, like we can write eigenequation a minus lambda I is equals to 0. So 0 minus lambda, fine, minus iota minus iota minus lambda equals to 0. So ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर +1 माइनस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर equals to 0. Yes, sometimes we do wrong here, like calculation wise. This will become iota square, this will become 1 plus minus 1. So the eigenvalues is 1 and -1. So for case 1, when lambda is +1, so we can say here ax equals to lambda x. So ax इक्वल्स टू एक्स, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो लैम्डा ए माइनस आई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो अपन आई कर सकते हैं, तो -1 आयोटा माइनस आयोटा तो लोग -1 एक्स को लेट्स से एक्स इज नथिंग बट x1 y1, x1 vector 1 is nothing but x1 y1 is equals to 0. So we can write it as minus x1 minus iota x1 is equals to 0, iota x1 minus of y1 equal to 0. दिस इज इक्वेशन हुए, दिस इज इक्वेशन 2. अगर हम इसमें आयोटा मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा, तो ये दिस विल बिकम इक्वेशन 2 ओनली. सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम 2 y1 is equals to iota x1. So x1 is nothing but x1 y1. This will become x1 iota x1 बाहर आएगा 1 iota. Therefore this is the vector 1 by iota so we had found eigenvector. Therefore 1 by 1 iota is a eigenvector in complex number field corresponding to field for lambda equals to 1. Now case 2 we can go for lambda जब -1 हो. Yes, तो ax is equals to x, तो a plus identity x equals to 0. Similarly we can go the same way, 1 minus iota, I think 1 iota 1. This is, let's say this is x2 because this is vector 2. x2 is nothing but x2 y2. So x2 y2 is equals to 0. So here we can write that x2 minus iota y2 is equals to 0. I1 iota 1 x2 plus y2 is equals to 0. Here again if you multiply iota here, iota square minus 1, if we multiply, this is 3, this is 4,
अगर हम 3 को 4 से आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 4 आई थिंक आयोटा x2 आयोटा स्क्वायर -1 तो फाइन लाइक तो वी कैन राइट इट एज y2 इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयोटा x2 तो x2 को हम लोग देख सकते हैं x1 y2 इज माइनस आयोटा x2 x2 क्योंकि वी आर डीलिंग विद x2 एंड y2 x2 कॉमन निकाला 1 iota so this is another vector field eigenvector therefore 1 iota is another eigenvector in complex field for lambda equals to -1. So we are done. Thank you all.